Dear students, today we will take second unit of paper B based on macroeconomics, and in this unit the first topic we are going to discuss is aggregate demand. What is aggregate demand? इसके बारे में हम आज सीखेंगे, पढ़ेंगे. Aggregate demand, it is demand for all goods and services. Demand for all goods and services that have been produced in an economy during an accounting time period, such as yearly basis. जब हम डिमांड कैलकुलेट करते हैं हर एक गुड और सर्विस का जो प्रोड्यूस किए गए हैं इकोनॉमी में एक महदूद टाइम के दौरान, वो साल का हो सकता है, क्वार्टरली बेसिस हो सकता है, मंथली बेसिस हो सकता है. यूजुअली हम एक साल के लिए कैलकुलेट करते हैं एग्रीगेट डिमांड. और जो ये एग्रीगेट डिमांड है इट इज जनरली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर. measured in terms of expenditure. When we demand a good, we have to pay. That payment means expenditure on that good. Therefore, generally, aggregate demand is measured, it is calculated in terms of expenditure. The value of aggregate demand is taken on the base of expenditure made on all goods and services produced in an economy during an accounting time period. What are the components of aggregate demand? Components of aggregate demand. AD means aggregate demand. पहले हम टू सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं. टू सेक्टर economy. In two sector economy, there are two sectors: household sector and second one is business sector or producer sector. Business, or we can write producer sector. As there is circular flow of income and expenditure between these two sectors, and their expenditure on goods and services in terms of consumption and investment. Consumption by household sector and investment by producer sector. Where C is consumption and I is investment. बिजनेस सेक्टर या प्रोड्यूसर सेक्टर का जो एक्सपेंडिचर है ऑन कैपिटल गुड्स, ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट इज टेकन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ वेल्थ, जिसको हम सरमायाकारी कहते हैं. ये एक प्रोड्यूसर इनकर करता है on production of capital goods and consumer goods. और जो कंजप्शन
एक्सपेंडिचर है, इट इज डन बाय हाउस होल्ड सेक्टर। जैसे कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी सर्विस की ज़रूरत है, तो इस पर जो हम पेमेंट करते हैं उसको हम कहते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जैसे कि फूड, क्लोथिंग पे, शेल्टर पे, पेन, बुक एटसेट्रा। इसी तरह सर्विस, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा, उसको हम कहते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और जो प्रोड्यूसर करता है उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और जो एग्रीगेट डिमांड है, इट इज एडिशन ऑफ दीज टू, दैट इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर and investment expenditure. Second component of aggregate demand is when we talk about three sector economy. थ्री सेक्टर इकोनॉमी, अगर हम थ्री सेक्टर इकोनॉमी की बात करें तो इसमें थ्री सेक्टर्स होते हैं। एक तो होता है हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर। दूसरा होता है बिजनेस, या जिसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर, बिजनेस और प्रोड्यूसर सेक्टर। एंड थर्ड कंपोनेंट इज गवर्नमेंट सेक्टर। थ्री सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर्स, इन्वेस्टर्स and government expenditure. Where C is consumption expenditure by household, I is investment expenditure by producer sector or by business or by investors, and G is government expenditure. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है एक कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी होता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी होता है। जैसे कि गवर्नमेंट खर्च करता है और कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस। इसी तरह इन्वेस्टमेंट करता है इंश्योरेंस सेक्टर में, कम्युनिकेशन सेक्टर में, फॉरेन सेक्टर में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और इसमें बहुत कंपोनेंट्स आते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में। एक तो गवर्नमेंट का कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसी तरह एग्रीगेट डिमांड इन केस ऑफ फोर सेक्टर इकोनॉमी, फोर सेक्टर इकोनॉमी जिसको हम ओपन इकोनॉमी भी कहते हैं। ओपन इकोनॉमी में जिसमें ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है, when economy is open to international trade, to trade with rest of world, उसको हम कहते हैं फोर सेक्टर इकोनॉमी या ओपन इकोनॉमी। इसमें जो सेक्टर्स होते हैं वो चार होते हैं। नंबर वन इज हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर। सेकंड वन इज बिजनेस और प्रोड्यूसर सेक्टर। तीसरा होता है गवर्नमेंट सेक्टर, और इसमें एक और सेक्टर ऐड होता है, दैट इज फॉरेन सेक्टर, फॉरेन सेक्टर, या हम लिख सकते हैं फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें जो एग्रीगेट डिमांड होता है वो होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एंड इसमें ऐड होता है नेट एक्सपोर्ट्स, which is the difference between value of exports and imports, where X is exports, M is imports, and difference between value of exports and imports, it is known as net exports.
difference between value of exports and imports is known as net exports. और इसमें जो एग्रीगेट डिमांड होता है वो इसके बराबर होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड सेक्टर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय बिजनेस और प्रोड्यूसर सेक्टर, plus government expenditure which may be in the form of government consumption expenditure or investment expenditure, plus net exports which is the difference between value of exports and imports. These three sectors of economy is known as closed economy, and when fourth sector of economy is there, then we can say it is open economy. There is addition of foreign sector, foreign trade, there is trade with the rest of world. ये था एग्रीगेट डिमांड। और यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि जो एग्रीगेट डिमांड है इसके लिए जो मिनिमम है, एक तो होना चाहिए कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगर हम खाली कंजप्शन एक्सपेंडिचर लेंगे तो इसको हम एग्रीगेट डिमांड नहीं कहेंगे। एटलीस्ट देयर शुड बी टू कंपोनेंट्स, एक तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय बिजनेस सेक्टर और बाय प्रोड्यूसर सेक्टर। अगर आपको पूछा जाएगा 1 मार्क्स व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, इफ देयर आर 4 ऑप्शंस such as aggregate demand is equal to C, aggregate demand is equal to C plus I, aggregate demand is equal to I, and aggregate demand is equal to G. Out of these 4 options, the correct answer is this one. Aggregate demand is equal to consumption expenditure plus investment expenditure. At least there should be 2 components. I hope you have got all this. Thanks.